ये आ गए, ये वाला मार लो। अच्छा, ये वाला, बस ठीक। राइट बेटा, so far what we covered was four sector economy. Now in the four sector economy, I'll be going a bit slow now because we are going to go for the multipliers of it. So in the four sector economy, what we did was we introduced exports and imports of an economy. And then we said that we remove the government sector from it. You must recall that old lecture, right? Now, today, what we do is we study about the multipliers of the four sector economy. Just a minute, beta. जी बेटा, आप राबिया हैं? अच्छा, मैं बेटा लेक्चर के बाद आपसे बात करूंगा. Right, beta. What we do is today we take up into consideration multipliers for a four sector economy of the four sector model. Now, previously in the four sector model, where we introduced two new sectors, import and export, and withdrew the sector of the government, what we said was that the value of the multiplier, the value, remember one thing, the value of the multiplier decreased as an income tax and import function. As an income tax and import function were introduced into the model of the economy. There what we did was that what basically a multiplier is and what multiplier shows and what is basically the value of the multiplier. Now today we take into consideration the multipliers of the four sector economy. I'm repeating it again and again for the simple reason that you try to understand so that it may not be a problem for you. So today, the multipliers of the source sector model of the economy is our basic topic. Now, in previously we said that the value of the multiplier decreased, meaning the value of the multiplier falls, decreased as income tax and the import function were introduced into the model of the economy. Because when we try to import more and export less, naturally the national income or the income level decreases of an economy. So here, when income tax is imposed, and at the same time, what we do is when the imports are more, naturally the value of the multiplier will be decreased. So today we take up household sector function first. Which sector? Household sector function. Because what we did in the beginning, recall my first class in which I said that there are four sectors and one of the sector is the household sector. I'm repeating it again and again that it should be in your mind. Anybody can ask you these questions. We said household sector, government sector, business sector, and a foreign sector. Now here I'm considering the foreign sector also. So there I have discussed with you the household sector. So today I'm taking into consideration the household sector function. Now, in the household sector function, what does a household do? Household basically consumes. So, in the household sector, we retain the same old consumption function. हम repeatedly वो एक ही consumption function को use करते हैं और उसको दोबारा recall करें. वो क्या है? Capital Y. Y is equal to C naught plus small b yd, that is C naught plus small b yd, where b is the coefficient, yd is the disposable income, C naught is the constant. So we introduced this consumption function previously, and now we take up the same old consumption in function. Now in the consumption function, we said B, the coefficient, and if you remember, I think if I'm not wrong,
it was in the three-sector economy or in the two-sector economy, we said that B stands for marginal propensity to consume. B stands for marginal propensity to consume. Now, small b, if it stands for the marginal propensity to consume, if you recall the definition of a marginal propensity to consume, if I'm not wrong, it was in the two-sector economy, as we discussed, takes a value greater than 0, but less than 1, right? So in the two-sector economy, what will be the equilibrium level now? Equilibrium level would be Y, capital Y, that is income, because we are taking up the equilibrium income. So Y, capital Y equals C naught, C सबस्क्रिप्ट नॉट, C के नीचे छोटा जीरो डाल दें, प्लस I नॉट, I के नीचे छोटा जीरो डाल दें, बट आफ्टर दैट आई बी सेइंग C नॉट प्लस I नॉट डिवाइडेड बाय, और जिसको आप कहते हैं ओवर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस B, that is Y equals C naught plus I naught divided by 1 minus B. Now, what is 1 minus B? So, the expenditure multiplier of the autonomous changes. What are the autonomous changes now here? C naught plus I naught. C naught plus I naught, that is the autonomous changes, and it would be equal to, we write subscript small e, small k, because we are dealing with the multiplier. Multiplier, as I said before also, is denoted by small k, छोटा k, और उसका सबस्क्रिप्ट नीचे डाल दें e, तो हम कहते हैं, and the expenditure multiplier for autonomous changes in C naught and I naught, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, C0 plus I0 मैंने कहा था, equals KE, the value of the multiplier, equals 1 over 1 minus B. 1 divided by 1 minus B. Now, this equation, let me ask you, what does this equation tell you? What does it show? Right, I'll say. This equation shows that induced consumption is the reason, is the basic factor, is the basic reason that autonomous changes in C naught plus I naught, that is consumption plus investment, results in a multiple change in the equilibrium level of income. Am I clear now? I'll repeat it again, right, if it is not clear. The expenditure multiplier, which I have shown you above, that is small k subscript e equals 1 over 1 minus b. Now, 1 over 1 minus b basically tells us, or basically shows, technically we write in English, shows that induced consumption is the reason that autonomous changes, I'm repeating it, right? That autonomous changes in C naught and I naught result in a multiple change in equilibrium level of income. This is what basically a household sector function is. If somebody asks you to find out the multiplier for the household sector function, then the household sector function, this is the multiplier. And the multiplier, we said, is denoted by small k subscript e equals 1 over 1 minus b. And it is 1 over 1 minus b, which shows us, or which shows us, or which tells us, or which is the basic reason. I'm using different words now, which is the basic reason, but technically we write in economics, which is the basic reason that autonomous changes in consumption C naught plus I naught results in a multiple change
in the equilibrium level of income. Clear? Now we come to the business sector, which was our second sector. If you recall in my first class when I was discussing model building. So we come to the business sector function. As above, I discussed household sector function. Now I'll discuss business sector function. Now in business sector function, what is the basic job of a business sector? The basic function or the basic job of the business sector is to make investment. So naturally, we will be discussing investment function first. What is the job? What is the basic function of business sector? Business sector gets savings or some income from the household sector and tries to make investment. And this investment naturally becomes the investment function of the business sector. Clear so far? Investment appears to be influenced by the level of profit. अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा इन्वेस्टमेंट कम होगा. इसीलिए हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट appears to be influenced by the level of profit. And the most important thing is the cost and availability of labor and other factors. Cost of labor and other factor. Other factors क्या है? कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लेबर है. तो अगर इसका कॉस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट जब कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा. अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा. लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह आपके साथ और फैक्टर्स भी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेबर है और जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं, और साथ में अदर फैक्टर्स जो है वो भी आप कंसिडर करते हैं. नाउ राइजिंग प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, राइजिंग प्रॉफिट्स जनरेट ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बिजनेसमैन क्या करेगा, उसको और भी वो देखेगा कि अगर मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे और फायदा मिलेगा. सो इट ट्राइज टू क्रिएट एन ऑप्टिमिज्म. क्लियर? तो राइजिंग प्रॉफिट जनरेट्स ऑप्टिमिज्म अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट लेवल, जो मैंने अभी आपको उर्दू में भी कहा है. एंड देयरफॉर स्टिमुलेट्स न्यू इन्वेस्टमेंट आउटलेस. And therefore stimulates new investment outlets. Now, अगर लेबर की शॉर्टेज आ जाए तो क्या होगा? लेबर शॉर्टेजेस एंड impending higher wages. अगर लेबर शॉर्ट हो जाएगा, आपको लेबर की जरूरत होगी, आपको उसको अट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरली आप उसको ज्यादा तनख्वाह देंगे, ज्यादा वेज देंगे, ज्यादा पैसे देंगे ताकि आके आपके साथ वो काम करे इन्वेस्टमेंट में. सो impending higher wages, wage rates depend on profit prospects, but remember one thing, underline but, that to generate investment outlays as business moves to adopt labor saving production method. I'll repeat it again. If you want to write it out or if you want to listen to my lecture, you can take the link from the coordinator, Amirullah. Amirullah is going to give you the link. By now, I think all of you have got the link of my lecture and etc. everything. So labor shortages and impending labor, higher wages, wage rate, decrease or depress, depress से मतलब decrease, effects, depress profit prospects, but they too generate investment outlays as business move, as business. तो बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन करेगा. तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, बिजनेस लिख दी है, तो आप लिख सकते हैं बिजनेसमैन. Businessmen move to adopt labor saving production method. अभी labor saving production method क्या हो सकता है? आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपको पता है लेबर सेविंग वो मशीनरी हो सकती है. अगर एक मशीन 10 लेबर काम करते हैं तो एक मशीन हो सकता है वो 10 लेबर का काम करे. तो हम ये कह सकते हैं
he tries to say adopt labor saving production method. Since profits and labor availability are in general positively related, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेबर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा, तो आपका लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी. क्यों? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इन चीजों से रिलेटेड है और ये चीजें उसको इफेक्ट करती हैं. It is reasonable to hypothesize. What is hypothesis? It is an assumption. Hypothesis आपसे पूछे आपने क्या क्यों कहा है hypothesize, बोले हम यहाँ पे assume कर रहे हैं. Assumption, presumption or hypothesis is one and the same thing. They are the different words used for hypothesis. Hypothesis, anything which is testable. Assumption, which is testable. Presumption, which is testable. So here we make a hypothesis that investment is a positive function of the level of income. The level of income क्या है इस दफा? I equals I naught plus small a y. A उसका coefficient है. I equals I naught investment I naught plus A. A जैसे हमने small b लिखा था coefficient marginal propensity to consume, तो यहाँ पे A, small a, that is the subscript, that is the value of Y, capital Y income, where A is the marginal propensity to invest. Previously हमने क्या कहा था? B marginal propensity to क्या था? Marginal propensity to consume. तो यहाँ पे A क्या हो गया? Marginal propensity to invest. और I naught क्या शो करता है? I naught investment forces. Am I clear? I'll repeat it again for your sake. Since profits and labor availability are in general positively related to the level of economic activity, it is reasonable to hypothesize. अब आपको पता होगा अभी hypothesis या hypothesize से मेरा क्या मतलब है? Assumption है, presumption है, anything which is testable. Hypothesize that investment is a positive function of the level of income, or level of income क्या होगा? That is investment I naught equals, or sorry, I investment equals I naught plus AY. A is the small subscript. A coefficient, small a. And what is A now? A is said to be the marginal propensity to invest, and I naught represents other investment forces. Clear so far? Now, let me explain it with the help of an example. Suppose we have got an investment function, as I said before, I equals I naught plus AY. Now, if this investment function is added to the two-sector model, जो अभी ऊपर हमने हाउसहोल्ड फंक्शन के साथ आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, उसके साथ हम ऐड करें तो इक्विलिब्रियम इनकम क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम इनकम होगा y, कैपिटल Y equals C naught, C subscript naught plus I naught divided by 1 divided by over 1 minus B, small, marginal propensity to consume, plus, sorry, minus, not plus, minus, I'm wrong here, minus A, where small a, as I said before, is the marginal propensity to invest. To repeat, capital Y equals C naught plus I naught divided by 1 minus B minus A. And the expenditure multiplier for the autonomous changes क्या होगा? Expenditure multiplier for the autonomous changes of C naught plus I naught बराबर हो जाएगा KE. KE क्या है? Small k subscript E हमने कहा है is generally used for to denote the value of the multiplier. तो small k subscript E,
स्मॉल के नीचे छोटा ई डाल दें तो वो बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस बी माइनस ए, 1/1 minus b minus a. Now the value of the expenditure multiplier, the value जो अभी आपने को मैंने बता दिया है कि के ई इक्वल्स 1/1 minus b minus a, वो वाला मल्टीप्लायर, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर मैं कह रहा हूं, is larger than the value of the multiplier which I have discussed in the case of a household sector function. Since why? आपसे पूछा जाता है कि क्यों why, which is basically one and the same thing, but still you say it is higher than that. Why? What is the basic reason behind it? Since there is both induced consumption, जो कि मैंने पहले आपसे कहा था, since there is an induced function or induced consumption and investment for autonomous changes in aggregate spending. ठीक है बेटा, इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि ये टॉपिक जरा टेक्निकल है, तो इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ले लें, I इक्वल्स आई नॉट प्लस ए वाई. ए क्या है? कोएफिशिएंट है. और जो हमने टू सेक्टर मॉडल में ऊपर ऐड किया था बी, तो यहाँ पे ए, तो दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट एंड द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर फॉर ऑटोनमस चेंजेस. ऑटोनमस चेंजेस क्या होगा? सी नॉट प्लस आई नॉट. So C naught plus I naught would be equal to KE, the value of the multiplier, equals I over 1 minus B minus A. 1 over 1 minus small b, remember small b, minus A, small a. So the value of the expenditure multiplier, जो ऊपर मैंने आपको अभी कहा है 1/1 minus b minus a, is larger as compared to what? As compared to the value of the multiplier of the household sector functions. Since there is both induced consumption and investment for autonomous changes in aggregate spending. Am I clear now? So far, any questions? If there are any questions, please do ask. Right. Now we come to the, since I'm discussing the business sector. So first of all, I discussed with you the investment sector because it is the basic function of the business sector. Now, what is the business sector? Corporations, the businesses generally withholds, in other words, it tries to retain a portion of their profit. It does not spend all the profit in investment or for the purchase of goods and services or for plants and machinery and so on. What does it do is that it tries to save a part of its profits. Thus, personal disposable income, जो हमने टू सेक्टर मॉडल में कहा था, with business saving is Y, capital Y, income equals, or sorry, is capital Y income minus U, Y minus U. तो U क्या शो करता है? Undistributed corporate profits. So it would be Y minus U, where Y is the income and U is said to be the undistributed corporate profits. Am I clear so far? Now, higher corporate profits do not immediately result in increased dividends. अभी डिविडेंड क्या होगा आप मुझसे पूछेंगे, आप डिक्शनरी खोल के देखें. और कौन सी डिक्शनरी यूज करते हैं आप? इकोनॉमिक की डिक्शनरी यूज कर लें. अगर नहीं है तो नेट पे देख लें, तो आपको डिविडेंड बता देगा. बैंकिंग सेक्टर में आपको डिविडेंड आ जाएगा. अगर नहीं है तो इकोनॉमिक की डिक्शनरी निकाल दें नेट से और उस पर देखें कि डिविडेंड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. ये आपका टास्क है. सिंस मोस्ट corporations
will not increase dividend disbursements unless they can be maintained. To repeat, higher corporate profit do not immediately result in increased dividends, since most corporation will not increase dividend disbursement unless they can be maintained. Now, given such behavior, given this type of a behavior of the business sector, what we are going to hypothesize, what hypothesis or assumption or presumption we are going to make. So the hypothesization which we are going to do is that a short run, not a long run, a short run undistributed profit function, where undistributed profits are positively related to profit level. That I'll repeat, we can hypothesize, we can make assumption, we can make presumption that a short run undistributed profit function, where undistributed profits are positively related to the profit levels. Profit level किसका है? Corporations का. Dividend किसका है? Corporations का. Since profit levels are generally positively related to income, मैंने शुरू में कहा था प्रॉफिट और आपका इनकम लेवल पॉजिटिवली रिलेटेड है, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. अगर एक इंक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, लेकिन वही चीज आएगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. ceteris paribus, all economic theories are based on assumptions. If any of that assumption is violated, then that theory does not hold. मैंने आपको शुरू में भी 2-3 दफा कहा है, अभी दोबारा मैंने रिपीट कर दिए. सो हम यहाँ पे एक assumption बना देते हैं और वो assumption is ceteris paribus or other things remaining the same. If other things remaining the same is violated, then this theory will not hold. Clear? तो हम कहते हैं since profit levels are generally positively related to income, the undistributed function कैसे शो किया जाएगा? विड बी यू जो ऊपर मैंने आपसे कहा y माइनस यू, और यू को मैंने क्या कहा था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स. ठीक है, तो u इज इक्वल टू यू सबस्क्रिप्ट नॉट, u इक्वल्स यू सबस्क्रिप्ट नॉट प्लस छोटा u. छोटा u कोएफिशिएंट, जैसे a का कोएफिशिएंट मैंने कहा था, b का कोएफिशिएंट कंजम्पशन फंक्शन में कहा था, तो छोटा u, that is the coefficient of y. Repeat, the equation would be u equals u naught plus छोटा u, that is the coefficient u of y. तो अभी u क्या रिप्रेजेंट करेगा? What does u represent? Small u क्या रिप्रेजेंट करेगा? वहां पे तो हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो यहां पे छोटा u क्या रिप्रेजेंट करेगा? हम तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे u रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू रिटेन अर्निंग्स. What does a small u represents? It represents the marginal propensity to retain earnings. इसको मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूं. क्लियर? एग्जाम्पल से, इफ द बिजनेस सेविंग फंक्शन, बिजनेस सेविंग फंक्शन क्या है? मैंने ऊपर कह दिया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय u इक्वल्स टू u नॉट प्लस u y, स्मॉल u y. अगर इसको हम ऐड कर दें टू सेक्टर इकोनॉमी के साथ, टू सेक्टर इकोनॉमी की एग्जांपल जहां पे हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या शो किया था? y इज इक्वल टू c नॉट प्लस i नॉट डिवाइडेड 1/1 माइनस b. अगर इसको हम ऐड कर दें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आएगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा कैपिटल Y इक्वल्स c नॉट, c सबस्क्रिप्ट नॉट प्लस i सबस्क्रिप्ट नॉट, जो आपके हाउस होल्ड फंक्शन से मैंने ले लिया है, और यहां पे मैं आपको बिजनेस सेक्टर से लेता हूं माइनस b, that is the coefficient, the small b, the coefficient of u naught.
y equals C naught plus I naught minus b, small b the coefficient, u naught divided by 1 minus b minus a, 1 minus b minus a plus, now in this case we are going to add b small b and small u, bu, and the expenditure multiplier क्या बन जाएगा autonomous changes के लिए? Expenditure multiplier for autonomous changes किस में हम निकालते हैं? Consumption investment में, जो आपको शुरू में मैंने आपको बता दिया था, as I explained, C naught plus I naught, the autonomous changes. So the autonomous changes would be equal to the multiplier denoted by small ke, small k subscript e, which denotes the value of the multiplier, equals 1 over 1 minus b minus a plus small bu. Clear? Now, in this case, we see that the positive relationship between business saving and income lowers the value of the expenditure multiplier. What does it do? It lowers the value of the multiplier. Now, for the time being, this is enough because it is more technical and it will be difficult for you to understand. I will not go further. If there are any questions, please do ask. If there are any questions, please do ask. Are you listening me? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर। तो बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बेटा जी जी कहें कहें। एग्जाम के हवाले से कि वो बेटा आप कोऑर्डिनेटर से पूछें, आमिरुल्लाह से पूछें, क्योंकि वो आपको सही चीज बताएगा। मैं तो कह नहीं सकता कि एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे और क्यों होंगे। ठीक है, तो बेटा वो आमिरुल्लाह कोऑर्डिनेटर हैं, फयाज कोऑर्डिनेटर है और दूसरा भी एक है, तो आप उन, लेकिन बेस्ट चीज ये होगा कि आमिरुल्लाह से बात कर लें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मैं गया था एग्जाम के बारे में, उनसे मैं बताऊंगा कि मैंने कोऑर्डिनेटर से कहा कि उन्होंने कहा कि 10 से डिसीजन हो गई इसी का कि ये इंस्टीट्यूट है रीओपन होंगे या नहीं। अगर ओपन होंगे तो 11 से एग्जाम होगा, अगर रीओपन नहीं होंगे तो असाइनमेंट होंगे, एग्जाम नहीं होगा। इसीलिए बेटा मैंने यही कहा ना कि वो आपको सही रास्ता बताएंगे। अगर मैं आपको कह देता कि 10 के बाद अगर यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, स्कूल्स कॉलेजेस खुल गए हैं, तो एग्जाम का चांस बन सकता है। अगर ना खुली तो मुश्किल है। अभी ये नहीं मुझे पता कि वो खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, लेकिन 10 इन्होंने टारगेट दिया है। लेकिन सुन रहे हैं कि इधर उधर से लोग खुल रही है सर। खुल रहे हैं। आपको कहाँ से पता लगा है? न्यूज से पढ़ा है इसमें। अच्छा बेटा न्यूज से पता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट साइड से वो कह रहे हैं कि नहीं जनवरी को पूरा बंद कर दें ये कोरोना की वजह से। लेकिन एनीवे ये मेरी ऐसे बात की है, इस बात को प्रोपगेट ना करें, प्रोपगेट ना करें। द बेस्ट थिंग इज, जैसे किफायतुल्लाह ने, आई थिंक इफ दिस वाज किफायतुल्लाह ने जैसे आपसे कहा है, तो इसीलिए बेस्ट चीज ये होगा आप कोऑर्डिनेटर से बात कर लें, आमिरुल्लाह से, ही इज ऑन द चेयर। अभी मैंने उससे मिल के आया हूँ इस लेक्चर लेने से पहले, तो आप उनसे बात कर लें तो वो आपको सही रास्ता बता देंगे। Any other question regarding the text, regarding my lecture? No, any other question? No question, sir. No question. मैं पूछ लूं question? बिजनेस सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में क्या फर्क है? What is the basic difference between the business sector and the investment sector? Or let me put it in other words, how would you define an investment sector and a business sector? सर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर इसमें फ़र्क ये है, अकॉर्डिंग टू टू सेक्टर इकोनॉमी जी, वो
जब सेविंग होगा और नो सेविंग हो, जब नो सेविंग होगा तो बिजनेस सेक्टर अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन वो इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ, और जब सेविंग होगा तो सेवन के बावजूद वो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज, करेगा। अच्छा, मुझे इन्वेस्टमेंट अभी में ये इंक्रीज। बता दें, जस्ट गिव मी द डेफिनेशन ऑफ अ डिविडेंड। By now you must have opened the dictionary. By now you must have opened the net. तो आपको पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है, ये पता नहीं सर डिविडेंड के लेकिन बारे में। पढ़ लें, क्योंकि अगर जी पेपर में इंशाल्लाह। क्वेश्चन में आ गया तो ये ना कह दें कि हमें आपने नहीं पढ़ाया। डिफाइन डिविडेंड ऐसा होगा सर? नहीं बेटा, ये तो अभी वर्डिंग्स मैं नहीं कह सकता। आ सकता है कि हाउ वुड यू डिफाइन डिविडेंड, व्हाट इज बिल्कुल। द डिविडेंड, व्हाई डू वी इंक्लूड डिविडेंड इन कॉर्पोरेशन प्रॉफिट, कॉर्पोरेट बिल्कुल प्रॉफिट्स, या कुछ और आ सकता है किसी तरीके से, लेकिन आपके रिलेटेड होगा इन वन वे और अनदर। इंशाल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह हाँ कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह बेटा, मैं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो इतनी मेहनत आप भी करें, ताकि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह वी विल डू थैंक्स सो। सर। Thank you, beta. Thank you very much for थैंक today. यू। अल्लाह हाफिज।